Thank you very much all the esteemed panelists, all the participants of this, those who raised questions, asked their queries. Mia Sahib, I thank you for your valuable contribution. Babar Sahib, thank you very much, sir. Dr. Sahib, thank you very much indeed. Ali spoke, he actually spoke my words and I'm really thankful to him जिस तरह से उन्होंने बात की. Umar, you moderated it very well. अहमद साहब आपने पहले बात की. मैं सुबह से इस पूरी गुफ्तगू को कोशिश कर रहा हूँ कि इससे सीखूँ और जो चंद बातें मैं सीख सका हूँ उनमें अव्वल तो ये बात है कि एक ज़रूरत और तलब महसूस हो रही है हर लिहाज से, और वो तलब ये है कि रियासत और शहरी का मुआहिदा बहर सूरत अब दोबारा से उस पर गौर करने की ज़रूरत है और वो बड़ा संजीदा गौर करने की ज़रूरत है. उसमें मॉडल सूबों का है या मॉडल डेवोल्यूशन की लोकल गवर्नेंस का है, और वो भी अगर मज़ीद सूबों की बातचीत के साथ वहाँ पर भी जितनी डेवोल्यूशन ग्रास रूट तक जाएगी सबकी एक कलेक्टिव कंसर्न तो ये है, एंड दैट इज डिवॉल्विंग पॉलिटिकल फाइनेंशियल पावर टू द ग्रास रूट्स. और इसके पीछे जो तहरीक नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अरसा इतने बड़े मुल्क को लोगों को एक नॉन पार्टिसिपेटरी रजीम में रख के गवर्न नहीं कर सकते. तो इसमें जो कुंडी साहब आपकी, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, the way you put that devolution of resources, आपने बहुत अच्छे अंदाज में बात की कि जो आइन के अंदर एक लिखा फॉर्मूला है. मेरा मुद्दा ज़रा थोड़ा सा इससे आगे बियॉन्ड है. मैं आप सबके सामने 3 नकात उठाना चाहता हूँ और मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है उसका एडवोकेट हूँ और मैं शिद्दत से ये बात करना चाहता हूँ और मैं हर जगह पे कर रहा हूँ. And my saying is an advocacy for the cause which the 1973 Constitution envisaged. I think not doing it is very primitive. हम कहीं बहुत पीछे एनाक्रोनिस्टिक अप्रोच में फंस गए, कहीं रह गए हैं. सवाल ये पैदा होता है कि क्या 73 के आइन ने अपने प्रियम्बल में, अपने आर्टिकल 140 में, अपने बाकी इससे जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सब के अंदर ये वजाहत कर दी बड़ी वाज़े तौर पे कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसका चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का इख्तियार है. अब ये गडमट जो कहाँ पर आ गई है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये 2 ऐसी टर्म्स हैं जो बज़वर्ड्स बन गए और कहीं पर मामला बीच में दब के रह गया. मेरे नज़दीक तो ये बहस अब बहुत ज़ोर से हो जानी चाहिए और इस पर सबको अपनी बात करनी चाहिए. पार्लियामेंट्री ओवरसाइट क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ फंक्शनल हैं? नहीं, बिल्कुल फंक्शनल नहीं है. दे आर डिसफंक्शनल. जो उनका मैंडेट है क्या वो काम कर रही हैं? मैं सिर्फ फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ. 10-10 साल की रिपोर्ट्स नहीं आती, कई साल की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है. क्या बजट मेकिंग प्रोसेसेस में इन असेंबलीज का कोई इख्तियार है? बिल्कुल नहीं है. क्या उसके अंदर कोई पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसेज हैं? एब्सोल्युटली नहीं है, बात ही कोई नहीं है. द गवर्नमेंट्स मेक इट, द एग्जीक्यूटिव्स ब्रिंग इन एंड यू जस्ट स्टैम्प इट. एंड द वर्स्ट पार्ट इज, जो सबसे बदनुमा हिस्सा है उसका, जिसको मैंने भी करेक्ट करने की कोशिश की आप सबकी मदद से, कि हम तो आर्टिकल्स ऑफ दी जो लॉ के हमारे पास सेक्शंस आते हैं, रूल्स आते हैं, हम तो वो भी नहीं पढ़ते. वो जो मैंडेटरी रीडिंग है हाउस में, एंड वी जस्ट कीप द पेपर एंड वी से आर्टिकल 32 to 48 दोज इन फेवर से आए एंड दे से आए, दोज अगेंस्ट इट दे से नो, दे से नो. हम तो पढ़ते ही नहीं है उसको, देखते ही नहीं. तो ये स्पेस जो आपने खुद छोड़ दी थी उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं. मैं आई एम रियली हैप्पी दैट दिस इज हैपनिंग. आप इस पर बात कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का इदराक हो रहा है. दिस इज़ वेरी गुड. अगला जो मुद्दा है वो है कि
کہ اگر یہ چیز آئین میں نہیں ہے تو پھر آئین میں لکھی ہوئی بات کو میں نے بابر صاحب نے بھی یہ بات کی, میاں صاحب نے بھی یہ بات کی, couple of other our friends also said, احمد کنڈی صاحب نے بھی یہ بات کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئین نے کوئی چیز تجویز کی ہے اس پر نا عمل کرنا غیر آئینی ہے, اور غیر آئینی کاموں کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کام کی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ پہ عمل نہ کریں اور اس کا کانسیکوینس نہ ہو. اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ لیٹ سے نفرت بڑھ سکتی ہے, لیٹ سے ڈپریویشن بڑھ سکتی ہے, لیٹ سے لوگوں کی دل آزاری اس حد تک ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر مختلف قسم کے سیپریٹسٹ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس کے اندر پروونشل ایک ڈس انفرنچائزمنٹ کا سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کی وفاقی, آپ کی ملک کی وحدانیت کا سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. دیز آر ویری ویری کانسیکوینشل تھنگز. یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ کسی کورٹ آف لا میں کسی جزا سزا کی بات ہے. اس کے وہ نتائج ہیں جو ہم بھی بھگتیں گے اور آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی. اب فائنلی مجھے اس بات پہ بھی بڑا اچھا آپ کا فیڈ بیک ہے سارا, اور یہ بات آپ جیسے کر رہے ہیں مجھے اس پر بھی خوشی ہے کہ جو یہ بحث پہلے کہ صوبوں کی بات کرنا, صوبوں کی اپنی پالیٹکس ہے. I heard a very interesting argument. مجھے ایک میرے بڑے اچھے دوست نے یہ بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان کا تو جو قیام تھا اس کی جو ریزولوشن تھی وہ پروونسز نے کی. تو 4 provinces decided in India, they decided that they will be Pakistan. So provinces have their own ownership. Let's put it this way. They will say that we created Pakistan. Our assemblies decided. They said that we will call ourselves Pakistan. This is how Pakistan was created. And secondly, that the politics of provinces is very deep-rooted. It has manifold consequences, and they could be of agitational nature, they could be of street power, they could be of political rights, they could be of provincial rights. So once we are talking of these ineffectiveness of the provinces right now, that there is stunting growth, there is schools we cannot manage, and as Mia Sahab gave the data, that is very alarming and bothering data. But still, the flip side of it is that there's the politics of provinces. And in recent past, we have seen that the canals issue, that the provincial canals were not, we were not able to even put the case rightly. It had to go the way the Sindh nationalists wanted. So can we beat it behind the bush? No. We have to speak up. We have to put the case forward in the right perspective. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آج کے ان کنسلٹیٹو سیشنز میں this is academic discussion, this is nothing against anyone, this is nobody's agenda. This is actually what the Constitution is, what the problems of the people are, what actually this purpose of devolution is. And I thank GIZ and Mustahkam Parliament program کہ آپ یہ مفید مذاکرہ کراتے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. And I can fairly say that I have learned a lot today in my own humble capacity from Mia Sahab, from Dr. Sahab, from Ali Haider Gilani Sahab, from Kundi Sahab, from Shah Sahab. Everybody was like a teacher here. Ali Raza is sitting at back. اور جو باتیں آپ نے کہی اس سے ہمیں اپنے کام کو بہتر انداز کرنے میں بڑا موقع ملے گا. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کل کے دن میں ہم آج کے اس بات چیت کے نتیجے میں کوئی جو ورکنگ پیپر کریں گے احمد صاحب, وی ول بی ود یو فار دیٹ.